और ਅਸੀਂ बहुत कम, बहुत टाइम, बहुत ज्यादा टेंशन अपने दिमाग से इस गलतियां लेके रखते हैं कि लोकी की कहणगे, राइट? दिस इज सेइंग इन द हिंदी, जैसे दैट सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. वी आर बिकमिंग अ फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन. जे किसी ने कहता नहीं 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 पर्पल कलर दी पगड़ी दा नहीं तेरे ते चंगी कर दी, आई एम नॉट गोइंग टू वियर पर्पल देयर आफ्टर बिकॉज मेरे फ्रेंड ने क्या सीखा, पर्पल तो तेन बिल्कुल सूट नहीं करता. वाइल वी थिंक के असी सब तो ज्यादा समझदार हैगे हैं, राइट? देन व्हाई आर वी गिविंग मोर वेटेज टू other people's opinion than forming our own opinion about ourselves? This is something which is apparently very contradictory, because what's happening is that the more we give weightage to other people's opinion about ourselves, knowingly or unknowingly we are giving our remote control of happiness to others. फिर उन्होंने दी मर्जी है, बटन दबा दें सानू खुश कर दें, बटन दबा दें सानू नाराज कर दें, सानू डिप्रेस कर दें, कुछ भी कर सकते हैं. एंड ऑल द टाइम वी आर ourselves giving number of remotes, judging what's he thinking about me, what's she thinking about me, and we unnecessarily are becoming football of others' opinion. एक ने किक मारी उठे चला गया, दूसरे ने किक मारी उठे चला गया, without being aware of it. So if we want to be happy, this is another thing, that we must retain that remote control with our own self, and we should not become football of others' opinion. And as it comes to the opinion, the same is true for intentions. We all the time are judging others' intentions. We all the time are judging what that person has a plan in his mind about me. And as what Mother Teresa said once we start judging, we stop loving. Once we start judging, we stop loving. Either we stop giving love, or we stop receiving love, or both. I can say that, for example, in this case, as far as giving love is concerned, I want to give love. And what I think, the person in front of me, does he really deserve my love or not? What if I give the love? How will he take it? We put so many conditions on that. And same is true when we receive the love. When somebody is showering affection, when somebody is showering love to us, again we have doubts. कोई मतलब होएगा, ताई है इन्नियां मिठियां मिठियां गल्लां कर रहा है, इस तो बाद मेरे तो कुछ मंगेगा, इस तो बाद मेरे तो कोई सवाल करेगा, मेरे तो कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, ताई करके मेरे आले दुआले ना. We start doubting, we start judging, and we therefore stop receiving love. And it's love which makes the quality of life. Just the way I said, acceptance. गुरबानी तो लिए सेता, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे. If you talk of love, प्रेम, very simply and shortly said, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो. राइट? जे प्रेम नाल प्रभु मिल सकता है, तब प्रेम नाल जगत या जगत की कोई वस्तु या व्यक्ति क्यों नहीं मिल सकती हैगी. We fail at the point we start judging, and that's where we are faltering at. And maybe I will say the last point, because the time is running out very fast. To be happy, we must distinguish between life situations and life.
life situation is something different and life is something different. We have to identify ourselves with the life and not with the life situations. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ. ਘਟਨਾ ਆਈ ਘਟੀ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ. Like I'm 44 years old, if I start recollecting, there will be thousands and thousands of situations which have come and which have gone. There's something in me which has not changed. And we have to identify ourselves with that something in me which is not a life situation. That something in me is the life. And this something, जिन्हें जान लिया, we can call it, if we go in for, शरीर आता है, शरीर जाता है, शरीर मिलता है, शरीर मरता है, but आत्मा अमर है. Let's identify with that thing which is not changing. If you go to the seashore, the waves come, the waves strike a rock, but the rock remains there. We are that rock, that unchanging rock, Atma, right? And of course, Atam Ras Brahm Gyani Jina. Atam Ras. That is it. Identifying ourselves. Now, last point, because the time is already over. I'm in the grace period now. That a wave is a wave as long as it is not identifying itself with the ocean. As long as it is not identifying with the ocean. A wave is formed, a wave is born. A wave is a big wave or a small wave. Wave has a form. Wave will strike. Wave will die. And you will have number of waves. But the moment wave starts identifying itself with the ocean, it's not a wave. Never be formed. It never be big or small or large. Will have a form. Will compare with other waves or ever die. That something in us is the one which is going to give us the inner peace, the inner joy, what we call it as happiness. I think I will just simply say that we want to be happy now. We want to be happy now. We should not have any regrets of the past. We should not have any anxieties of the future. We have to remain in the moment as it is. Accept the inevitable moment as it is. We have to surrender to the moment as it is and let go any other kind of feeling. That's the way, that's the key to happiness. We should not worry at all. Nanak chinta mat kar, chinta tisi hai. No need to worry what's to happen, how is to happen. It will happen the way it has happened earlier. So we all have to go by the English song. Don't worry, be happy. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਲੜਕੇ ਆਇਆ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਅਫਸਰ ਦਾ ਮੂਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਘਰੋਂ ਲੜਕੇ ਆਇਆ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਉਹਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਹੈਪੀ, ਪਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਇਹ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ. ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਦੱਸੋ। Again, there is a saying which goes by, we do not see the world as it is. We do not see the world as it is. We see the world as we are. Just to explain the thing, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? The world is mirror of our own inner self. ਜੇ ਸਾਡਾ inner self ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ the world around us ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜੇ inner self ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਅਸੀਂ स्विट्जरलैंड चले जाइए, कैनेडा चले जाइए, 5 स्टार होटल खाना खा रहे हैं, जे इनर सेल्फ तपिया होया है, खिजिया होया है, मचिया होया है, किहो जी भी बाहर की सिचुएशन होए असी खुश नहीं रह सकते। जिन्हां दा अंदर शांत है, ठंडा है, वो तत्ती तवी ते बैठ के भी बंद कटा के भी सी नहीं उचरते। द आइडिया इज नॉट टू चेंज द वर्ल्ड अराउंड, but to change our own self. And what I feel right now, the next question will be ke how to change yourself. यही ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, how to change the self. So just go for a cycle which starts from the thoughts. Whatsoever are the kinds of thoughts which we are having, those thoughts, they become intentions. Intentions become actions, become habits, becomes behavior, becomes character. और जिस तरह का character बन जाता है फिर उस तरह के thoughts आते हैं। circle बन गया ना। Now how to get out of the circle? जदों thoughts आ रहे हैं, that point we have to put a check, that point we have to put a filter कि जेडे thoughts आए हैं ये positive thoughts हैं या negative thoughts हैं, रखन वाले thoughts हैं, छटन वाले thoughts हैं। जे रखन वाले thoughts हैं तो उन्होंने रख लिया जाए, जे नहीं रखन वाले thoughts तो उन्होंने surrender कर दिया जाए। And herein the role of guru comes in. बिना गुरु तो गति नहीं है। गुरु इज गोइंग टू गिव अस विवेक, जो सानू थॉट्स नू फिल्टर करने च, अच्छे और बुरे थॉट नू डिस्टिंग्विश करने च सानू हेल्प करेगा। और गुरु नू ही असी जेडे सानू बॉदर कर रहे हैं थॉट्स, उन्होंने समर्पित करके उन्होंने थॉट्स तो मुक्त हो सकते हैं। मुक्ति गुरु के थ्रू ही मिलेगी, अपने आप नू चेंज करने मिलेगी, बाहर कुछ करने मिलेगी।